Hello students. So today we are going to start the part 5 of the IUPAC nomenclature. Okay. So already we have done the 4 videos based upon these IUPAC nomenclature. Okay. So if you are interested, if you want to know the rules, okay, like this is the part 5. So many more rules already I have explained in the 4 videos. Okay. So you can just scroll and you can see the playlist. There you will find each and every video related to this IUPAC nomenclature. So today we are going to see these IUPAC nomenclature of the compounds containing the functional group, because till now whatever I have explained you, because I tried to segregate the topic, so till now I have not explained you about the functional group, means what will happen if the compound will contain the functional group. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर कंपाउंड में, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्कोहल या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, नाइट्राइल, साइनाइड, ठीक है, एमाइन, अगर ऐसा सब ग्रुप्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, तो हम लोग जो है IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट नाउ. So first of all, these I'll explain you what I have written. Okay, as of now you just need to know that. See, before going to the this functional group part, okay, first of all we will see some things like whenever in a compound you will see such type of substituent or functional group. Okay, such type, like I have written here clearly that if you see halogen in your compound, ठीक है, हेलोजन अगर कंपाउंड में, हेलोजन मतलब क्लोरीन अगर ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कंपाउंड में है, या फिर नाइट्रोसो, नाइट्रोसो मीन्स NO ग्रुप, या फिर नाइट्रो NO2, एल्कोक्सी OR, ओके, yes, alkoxy OR, then what, alkyl like CH3 C2H5 etc, and then phenyl. If you see these type of group in your compound, अगर ऐसा ग्रुप्स कंपाउंड में होता है, फंक्शनल ग्रुप्स, तो उस ग्रुप को हमेशा हम लोग प्रीफिक्स के जैसा लिखते हैं. ठीक है, मतलब एक होता है सफिक्स, एक है प्रीफिक्स. मैंने ऑलरेडी बताया था कि सफिक्स वी राइट आफ्टर द वर्ड रूट एंड प्रीफिक्स मीन्स वी राइट बिफोर द वर्ड रूट. प्रीफिक्स मतलब हम लोग वर्ड रूट लाइक पेंटेन, एल्के, ब्यूटेन, ये होता है वर्ड रूट. वर्ड रूट से पहले जो लिखते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, और वर्ड रूट के बाद जो ग्रुप लिखा जाता है उसको सफिक्स बोला जाता है. ठीक है, सो ये सब ग्रुप अगर कंपाउंड में है तो ये हमेशा ही प्रीफिक्स के तरह से एक्ट करेगा, मतलब उसको हमेशा वर्ड रूट के पहले ही लिखना पड़ेगा. लाइक क्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है, ये सबको हम लोग ऐसा लिखते हैं. yes, the Cl if you get you have to write chloro, Br if you get you will write bromo, if you get iodine the name will be iodo, and if you get fluorine it will be fluoro. Okay, no, so these are always the prefix substituent. Okay, prefix like CH3, already I've said you that these alkyl groups they are kept before the word root. word root के पहले ही आएगा ये सब. ठीक है, suffix में act नहीं करेगा. So we will see these all by taking examples. I have taken many examples, so gradually we'll come to know. Now one more thing, that functional group अगर एक है कंपाउंड में, ठीक है, अगर एक कोई कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक है, ओनली वन, देन तो देर इज नो प्रॉब्लम, देन देर इज नो प्रॉब्लम, ऑलवेज द फंक्शनल ग्रुप विल बी रिटन आफ्टर द वर्ड रूट. ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जैसे इस कंपाउंड में अगर देखोगे तो ये OH जो है एल्कोहल होता है. ये सब तुम लोग को धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि what is this alcohol. The group OH is known as the alcohol group. Okay, so whenever there is only one functional group in the compound, there is no problem, always the name of the functional group will come as suffix. अगर एक ही functional group compound में है तो वो हम लोग word root के बाद ही उसका नेम लिखेंगे. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे. लेकिन अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल आई विल शो यू दिस कंपाउंड. इसमें देख सकते हो कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO एंड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, ऐसा अगर कंपाउंड होता है,
अगर मतलब एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप, इन वन कंपाउंड इफ यू गेट टू फंक्शनल ग्रुप, then there is a problem. Then what is the problem? That one functional group has to act as prefix and another functional group has to act as suffix. दोनों सफिक्स एक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक होगा तो हमेशा सफिक्स में लिखोगे फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो एक को प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा, एक को सफिक्स में। नाउ हाउ डू वी नो कि विच फंक्शनल ग्रुप वी विल राइट इन प्रीफिक्स एंड विच वन इन सफिक्स? ठीक है, इसके लिए हमारा आ जाता है प्रायोरिटी ऑर्डर। फॉर दिस ओनली द प्रायोरिटी ऑर्डर इज गिवन। ओके, so this priority order tells us that which functional group we have to prefer over the other. ये प्रायोरिटी ग्रुप से हम लोग को पता चलेगा कि किस फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में रखना है और किसको सफिक्स में रखना है। ठीक है, सो दीज एरो साइन हैव गिवन नो दिस ग्रेटर देन साइन, राइट? तो इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है पूरा सीक्वेंस में, यू कैन सी, राइट? दैट मीन्स द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द मोस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, राइट? सो दैट मीन्स अगर कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा सफिक्स में लिखना है। ठीक है, हमेशा सफिक्स में लिखना है। ध्यान देना कि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा उसको सफिक्स में लिखना है, मतलब वर्ड रूट के बाद में लिखना है, और जिसका प्रायोरिटी कम, मान लो कि एक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है, तो यू कैन सी दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर प्रिफर्ड देन एस्टर, राइट? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज कमिंग बिफोर द एस्टर इन द प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के पहले आ रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एज अ सफिक्स नाम लिखेंगे और एस्टर को एज अ प्रीफिक्स लिखने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेड यू, राइट? So for that this priority order is very very important. You have to memorize means slightly you will memorize, because all these does not come in your exam. Okay, some of the common like carboxylic acid, ester, okay, sometimes aldehyde, nitrile, ketone, alcohol, amine, alkene, alkyne, these all are important. So I suggest that you just, if you can, you just memorize these sequence as a whole, right? So थोड़ा धुंधला धुंधला भी याद रहने से इट विल वर्क। ओके, so these you have to note down. It is there in your NCERT book also. You can note down from there the priority order of the functional groups, and according to this only you have to name the compound. Clear? So now, yes, so one more thing before starting that, see, तो अभी तो मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, वो प्रीफिक्स भी एक्ट कर सकता है, सफिक्स भी एक्ट करता है, राइट? सो अगर प्रीफिक्स एक्ट करेगा तो उसका नाम डिफरेंट होगा, और अगर सफिक्स एक्ट करेगा तो उसका नेम डिफरेंट होगा। दैट मीन्स इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज एक्टिंग एज अ प्रीफिक्स द नेम विल बी डिफरेंट, if it is acting as a suffix the name will be different. So here I have written the name of the functional group, the prefix name and the suffix name. See, here I have not written all the functional group because I think all these are important and they are common in your exams. But if you want to see the more, like, okay, the more functional groups are there in your book, so you can refer to your NCERT book. Okay, so like carboxylic acid, so carboxylic acid, if it has to be written in the prefix we will write this name carboxy, लेकिन अगर उसको suffix के जैसा act करना होगा so we will write oic acid, OIC acid, right? सिमिलरली अगर सल्फोनिक एसिड, दिस सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है, उसको अगर प्रीफिक्स में लिखना हो सो यू विल राइट सल्फो, एंड इफ यू हैव टू राइट एज अ सफिक्स, मतलब वर्ड रूट के बाद अगर लिखना है सो यू विल राइट सल्फोनिक एसिड फुल। नाउ सिमिलरली नाइट्राइल, ओके, CN, नाइट्राइल और साइनाइड सेम थिंग. So if you have to write as a prefix, you will write cyano, and if it has to be written as a suffix, you will write nitrile, right? Similarly for aldehyde, for suffix it is Al, and for prefix it is formyl. Ketone, for suffix it is One, on, and for prefix it is keto or oxo. Okay, in some books you will get keto, in some books you will get oxo. Now alcohol, OH. So the suffix name is Ol and the prefix name is hydroxy. Okay, likewise I will show you by examples so that it will be more clear. So now we will come to the rules. First rule, see the rules are same because
What? The rules will be same obviously. So first of all, what do we do when we write the IUPAC nomenclature? पहला काम हम लोग क्या करते हैं, longest chain को find out करते हैं. So longest chain must contain the carbon containing functional group. So इसमें क्या है कि जो longest chain हमारा होगा, obviously वो longest chain means what? कार्बन, the longest carbon chain मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा हो वो हमारा को चूज करना है. लेकिन इसमें एक चीज है कि वो जो हमारा longest chain होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज वन क्राइटेरिया कि लॉन्गेस्ट चेन शुड बी देयर, बट द लॉन्गेस्ट चेन मस्ट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन. ठीक है. So I'll show you here by an example that here you can see that this compound. Okay, so try to name it. So first of all we will see the longest chain. So if we go according to the earlier videos, we will find out that this is the longest chain. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 carbons. So you will think that this is the longest chain, right? But what does this rule says just now, that the longest chain must contain the carbon containing functional group. ठीक है. So longest chain में functional group carbon होना पड़ेगा. Okay. So then what will be the longest chain? Now you see that if we choose these as our function longest chain, अगर हम लोग इसको longest chain choose करते हैं, इसको अगर longest chain choose करते हैं, so this is the functional group, right? This is the functional group, the alcohol OH, right? सो इफ वी चूज, अगर हम लोग इसको हमारा मेन चेन पकड़ते हैं, प्रिंसिपल चेन, सो दैट मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज दिस वन, राइट? सो ये तो मेन चेन में नहीं आ रहा है, लेकिन द रूल सेज व्हाट? द रूल सेज दैट द लॉन्गेस्ट चेन मस्ट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन. दैट मीन्स ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होना चाहिए. सो हाउ डू वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन नाउ? So the longest chain will contain these carbon, it is must. So that means we have to choose our longest chain like this, so that the carbon containing the functional group should be included. Okay, so since this is bigger, we will choose this one. So if, because this is, you can see 1 2 3 4 and this is 1 2 3 4 5. ठीक है, इधर 5 है, इधर 4 कार्बन है, तो इसीलिए इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे ऑब्वियसली. एंड दिस कार्बन तो वी हैव इंक्लूड ऑल, दिस कार्बन तो वी हैव टू इंक्लूड. ठीक है, इस कार्बन को तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू द फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली. ठीक है, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो उसको मेन चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, ये रूल के हिसाब से है. ठीक है. So that means this is our principal chain, right? This is the principal chain. Now how do we number? For numbering there is the rule, the carbon atom connected to the functional group must get the lowest number. I think that you should write down these rules, right? लिख लो. So carbon atom जो functional group के साथ connected है उसको lowest number मिलना चाहिए. ठीक है. So how do we number? So functional group के साथ connected carbon तो ये वाला है, राइट? फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये है, मतलब इसको क्या होना चाहिए? इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. मीन्स वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर एंड नॉट फ्रॉम हियर, राइट? सो हाउ डू वी नंबर? दिस विल बी 1, राइट? दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 3 and 4 and 5, right? So this is our numbering order, that 1 2 3 4 5. So word root will be pentane, because 5 carbons are there, word root will be pentane. Okay, since alcohol functional group is there, already I have said you that if alcohol functional group will be there, so if one functional group is there, because here only one functional group is there which is alcohol, so इसको हम लोग suffix में लिखेंगे, और suffix का name alcohol का क्या होता है? OL, right? Suffix name is what? OL. So we will write now. So the word root is what? Pentane. The word root is pentane, right? Now the functional group is OL, alcohol, and the functional group is connected to carbon number 1. functional group किस कार्बन से connected है? number 1. और मैंने already बोला एक functional group है तो suffix में लिखेंगे. suffix में लिखने का मतलब क्या है? word root के बाद लिखेंगे. ठीक है, so you write pentane 1 all like this, pentane 1 all. ठीक है, suffix में लिखने का मतलब क्या है? after the word root.
ठीक है, आप वर्ड रूट के बाद। सो पेंटेन हमारा वर्ड रूट है बिकॉज 5 कार्बन्स है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम क्या होता है, OL, ठीक है, OL सफिक्स नेम OL। सो वी विल राइट पेंटेन 1 ऑल, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। सो व्हाट इज लेफ्ट, दिस वन, this one, you can see that this is not included in the parent chain, that means this is the substituent। already मैंने पहले ही बहुत बार बताया है कि जो फंक्शनल जो पेरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं है दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट। सो द सब्स्टिट्यूएंट इज इथाइल, यस और नो, द सब्स्टिट्यूएंट इज इथाइल, right? So now though you can identify these ethyl group, right? Many videos you have already seen. So the ethyl is connected to carbon number 2, so you write, already I have said that these alkyl is always used as a prefix substituent। prefix मतलब word root के पहले ही आएगा हमेशा alkyl group, ठीक है। be it methyl, be it ethyl, propyl, they will always come before the word root, ठीक है, because they are prefix substituent, ठीक है। alkyl group, remember, you can never write after the word root, you have to write before the word root only, ठीक है। so all these things you have to mind it, you can note down। so you will write 2 ethyl, no gap in between, right? And this will be small letter, so 2 ethyl pentane 1 all। one thing you remember, since this after pentane there is something to write, so you drop this e, right? e को drop कर देना क्योंकि अभी भी हमारा खत्म नहीं हुआ। सो व्हेन इट इज एंडेड सो वी राइट द ई, बट अभी भी क्योंकि 1 ऑल लिखना बाकी था तो ये ई नहीं लिखना, ये ई को ड्रॉप कर दो। सो द नेम विल बी, नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 ethyl pentane 1 ऑल, राइट? 2 ethyl pentane 1 ऑल। नाउ वी विल सी द सेकंड एग्जांपल, राइट? सेकंड एग्जांपल। So in the second example, you can see that the functional group, first of all, you identify the functional group, it is the ketone functional group। और since one functional group is present, एक ही functional group पूरा compound में है, ठीक है, एक ही functional group present है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, suffix में लिखेंगे। obviously अभी बताया कि एक ही अगर functional group है तो उसको हमेशा suffix में ही लिखना है। और ketone का suffix का name क्या है, this is ketone, C double bond O, right? so ketone का suffix का name is ONE, ONE, okay? so all these, once you practice it will come to your mind, okay? so now we will find out the longest chain। first of all the work is to find out the longest chain। so already I've said you that the longest chain must contain the carbon containing the functional group। so this is the functional group, so that means the longest chain should be like this, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, इसीलिए हमारा पेरेंट चेन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। So abhi now we will number, so we can number from here 1 2 3 4 5, we can number from here 1 2 3 4 5। so both sides if we number, the ketone gets number 3, right? so हम लोग किस तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो कीटोन को 3 मिलता है, करेक्ट, लेकिन मिथाइल ग्रुप, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल ग्रुप को 4 नंबर मिलता है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग इस साइड से नहीं करेंगे, इस साइड से करेंगे, बिकॉज इफ वी नंबर फ्रॉम द राइट साइड व्हाट विल हैपन, द मिथाइल विल आल्सो गेट द लोएस्ट ग्रुप, ठीक है। हमेशा हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट को, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले जितना हो सके, ठीक है। अभी तक तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। सो इफ वी नंबर फ्रॉम दिस साइड, कीटोन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको 3 ही मिल रहा है, लेफ्ट राइट नो प्रॉब्लम, लेकिन मिथाइल को लेफ्ट से करने से नंबरिंग 4 मिलता है नंबर, राइट। सो इसी और राइट से करने से मिथाइल को नंबरिंग 2 मिलता है, इसीलिए लोएस्ट हम लोग लेंगे और राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। सो वी विल नंबर फ्रॉम द राइट साइड नाउ। so what is the parent word root? word root is 5 carbon, 5 carbon means pentane, right? 5 carbon means pentane, so we will write pentane। now what is the substituent? methyl, and at what position? 2, so we will write 2 methyl, 2 methyl, right? pentane, and what is the functional group? functional group तो word root के बाद आएगा क्योंकि एक ही present है, so it is present at number 3, so you write 3 on, because all the suffix name of ketone is on, suffix name of ketone is on, I have written all this for you only, right? so this is 2 methyl pentane 3 on, 2 methyl pentane 3 on। so I think that now somewhat you are getting what I am trying to say, right?
Now the third example we will see. So here you find out the parent chain. So this will be our parent chain, no doubt. Parent chain यही होगा क्योंकि carbon containing the functional group is included in the parent chain. Carbon connected to the functional group ये वाला है ना, और ये पेरेंट चेन में आ रहा है. अगर हम लोग इसको पेरेंट चेन लेते हैं तो हम लोग इसी को पेरेंट चेन लेंगे. ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5. क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अगर हम लोग राइट साइड से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग राइट लेफ्ट से करेंगे तो करके देखो. सो द फंक्शनल ग्रुप विल गेट 1 2 3 4 नंबर. The OH, which is the what? Which is the alcohol group, will get the 4 number if we number from this left side. So already I have said you that in rule number 2 what does it say? That the functional group must get the lowest number. ठीक है, तो functional group को lowest number मिलना चाहिए, इसीलिए नंबरिंग किधर से होगा? ऑटोमेटिक राइट से ही होगा, because it is getting number 2. So this is wrong, this is not correct, right? So we will number from the right side. So yes, so now what is the root? 1 2 3 4 5. Again pentane, okay. OH, only one functional group, so it will be what? OL. So pentane at which position? 2-ol, 2-ol, pentane 2-ol, right? Now substituent है ना, ये है और ये है, दो substituent है. किस पोजीशन पे है? 4 पोजीशन पे है. So 4,4 dimethyl, 4,4 dimethyl pentane 2-ol, 4,4 dimethyl pentane 2-ol, right? So come to this example. So here you can see this will be our parent chain. Okay, this will be the parent chain. Okay, now obviously यही होगा क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन कनेक्टेड है वो पेरेंट चेन में आ रहा है. ठीक है, और कोई है भी नहीं, सो यही पेरेंट चेन होगा. नंबरिंग कैसे करेंगे? अगर इफ वी नंबर फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5, so the chloro gets number 2, bromo gets number 3. But if we number from this side, okay, if we number from this side, bromine gets number 3, chlorine gets number 4. So you can see that 3 4 and from here 2 3. So lowest is which one? 3 2 3. ठीक है, 2 3 मिल रहा है इस साइड से. So we will choose these, the left one, not the right one. ठीक है, जितना हो सके लोएस्ट नंबर देने का कोशिश करो सब्स्टिट्यूएंट को, that will be correct, right? Now how do we write the name? Already I have said you that the halogens, that means the chlorine, bromine, iodine and fluorine, they always act as the prefix substituent. That means वो word root के पहले आएगा हमेशा. So I have already said, right? So how do we write then? So what is the parent chain? It is pentane again. Okay, intentionally I have not done. So pentane again. Now this is chlorine, this is bromine, right? So पहले किसको लेके? Alphabetical order देखो. Bromine comes first and then chlorine. So we will write first bromine, 3 bromo, comma 2 chloro, or you can give like this hyphen 2 chloro, right? And then what? Pentane, right? क्योंकि functional group तो है नहीं यहाँ पे, only what was there? The alkyl groups. So 3 bromo, 2 chloro, and the parent chain is pentane, so it was somewhat easy. Okay, so here I have chosen this example because I have to show you that जो भी हेलोजेंस होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इसको हमेशा वर्ड रूट के पहले ही लिखना क्योंकि these are prefix substituents. Remember, these are prefix substituents, right? और कुछ examples है, right? So we will see these also. Okay. So now this one is the parent chain. Which one will be the parent chain? The parent chain will be, see this group, no? This group you have to identify. This is the alkoxy group. The alkoxy group is OR. Oxygen connected to the alkyl group is known as the alkoxy group. इस मिथाइल के जगह में C2H5 भी हो सकता है, no problem. ठीक है, so alkoxy group में क्या होता है? O alkyl group. O के साथ में अल्काइल ग्रुप होगा, ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज द एल्कोक्सी ग्रुप. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी, क्योंकि एक ही कार्बन है. अगर 2 कार्बन होता C2H5, सो वी विल से इट एज इथॉक्सी, लेकिन सिंस एक ही कार्बन है सो द नेम विल बी मिथॉक्सी, राइट? पेरेंट चेन ये वाला होगा, दिस विल बी आवर पेरेंट चेन, क्योंकि पेरेंट चेन में जो कार्बन है कनेक्टेड, बिकॉज दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप काइंड ऑफ, सो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पेरेंट चेन में आना चाहिए.
सो ऐसे अगर हम लोग लेते हैं तो पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा है. ठीक है, हाउ डू वी नंबर इट? So we will not start from here. Obviously you know the reason, because 1 2 3 the functional group will get number 3. इधर से करेंगे तो 1 2, so इधर से ही करते हैं. शॉर्टेस्ट मिलना चाहिए, मतलब लोएस्ट मिलना चाहिए. So 1 2 3 4. So the word root is butane, right? Butane. We will not add e because we have to write more. Yes, and one more thing, already have said you that alkoxy, it is a what? Alkoxy, it is a prefix substituent, means we will write before the name, before the word root. So write 2 methoxy, 2 number methoxy, 2 position पे methoxy, so 2 methoxy, small b, okay, not capital. 2 methoxy butane, क्योंकि कोई functional group नहीं है, so we will write the e, we will end here only, 2 methoxy butane. Okay, okay. So otherwise the video will become longer, so I'll choose some like examples and leave some of these, right? So this one I'm showing you because this is somewhat tricky. So first of all, write the structure, because it is written in the condensed formula 3 times. So I'm expanding it. Expand कर दो, 3 times बोला है ना, ठीक है. See, this is CO, ketone. This is CO, ketone. Sometimes ketone को ऐसा भी लिखेंगे, कहीं कहीं पे CO they will write directly. So this is ketone, right? ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर. पेरेंट चेन कौन सा होगा? पेरेंट चेन ये वाला होगा, obviously, right? How do we number? How do we number? So the functional group, you can see here that there are 2 functional group. One is the ketone, one is the alcohol. ठीक है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल चूज किया, एक कीटोन एक अल्कोहल. अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा एक ही फंक्शनल ग्रुप था, अभी 2 आ गया, एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप, राइट? नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग कैसे करेंगे? जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. ध्यान से सुनना, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देना है. सो यू सी बिटवीन कीटोन एंड अल्कोहल, कीटोन एंड अल्कोहल विच इज हायर इन द प्रायोरिटी ऑर्डर, कीटोन. कीटोन पहले आता है अल्कोहल में से प्रायोरिटी ऑर्डर में, सो कीटोन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है. So ketone should get the lowest number. So we will start from the right hand side, the numbering 1 2 3 4 5 6 7, right? So I hope you can get what I am telling. ठीक है. How do we write the name? कितना कार्बन्स है? 7. So the word root will be heptane. अभी अभी बोला कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हो कंपाउंड में तो एक को प्रीफिक्स नाम देना पड़ेगा, एक को सफिक्स. किसको सफिक्स किसको प्रीफिक्स देंगे? जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसको सफिक्स में लिखेंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आता है उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे. सो कीटोन कम्स फर्स्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन जस्ट नाउ. कीटोन कम्स फर्स्ट इन द प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट? कीटोन कम्स फर्स्ट इन द प्रायोरिटी ऑर्डर, देन अल्कोहल. सो कीटोन शुड बी रिटन आफ्टर द वर्ड रूट. सो कीटोन का नेम, सफिक्स नेम क्या होता है? कीटोन का सफिक्स नेम क्या होता है? ओन. सो वी विल राइट, कितने पोजीशन पे है ओन? 2 ओन. 2 पोजीशन पे कीटोन है ना, सो 2 ओन. इसका नेम क्या होगा? ऑब्वियसली इफ कीटोन इज रिटन एज द सफिक्स, अल्कोहल विल बी रिटन एज द प्रीफिक्स. सो अल्कोहल का प्रीफिक्स नेम क्या है? अल्कोहल का प्रीफिक्स नेम क्या है? हाइड्रोक्सी. द प्रीफिक्स नेम ऑफ अल्कोहल इज हाइड्रोक्सी, रिमेंबर. सो वी विल राइट 7 पोजीशन में हाइड्रोक्सी, सो 7 हाइड्रोक्सी स्मॉल h, 7 hydroxy heptane 2 on. 7 hydroxy heptane 2 on. You will not write the e, right? 7 hydroxy heptane 2 on. So like this you will do. I know that it is somewhat confusing to you, but once you start doing, it will come to your practice. Now this compound you take. So in this compound you can see that there are 2 functional groups again. One is the carboxylic group, another one is the aldehyde group. अभी कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में देखो पहले कौन आता है. कार्बोक्सिलिक इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन दी एल्डिहाइड किधर है? दिस वन, ठीक है. कार्बोक्सिलिक कम्स फर्स्ट एंड देन एल्डिहाइड. सो कार्बोक्सिलिक को हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर देना होगा,
लोएस्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले होगा उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए और वो सफिक्स के जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस शुड गेट नंबर 1, इसीलिए मैंने जो पेरेंट चेन चूज किया उसमें parent chain will be this one, right? The parent chain will be this one because this is the substituent, no need to take this as the parent chain क्योंकि ये तो substituent है. So number it, so 1 2 3 4, ठीक है. 1 इसको नंबर नहीं करो क्योंकि ये substituent है, ठीक है. So what will be the word root? Butane. The word root will be butane, ठीक है. Carboxylic groups has the most priority, more priority than एल्डिहाइड. सो इसको हम लोग सफिक्स के जैसा लिखेंगे और सफिक्स का नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? ओइक एसिड. सो यू राइट ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, राइट. एल्डिहाइड व्हाट? एल्डिहाइड इट्स कनेक्टेड टू नंबर 4 कार्बन एंड एल्डिहाइड को प्रीफिक्स लिखेंगे ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक को तो ऑलरेडी सफिक्स में लिख दिया, तो एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है. सो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स नेम क्या है? एल्डिहाइड का प्रीफिक्स नेम इज फॉर्माइल. Formyl, right? Formyl. So we will write 4-formyl. 4-formyl butane, again small. 4-formyl butane 1 oic acid. See, sometimes in some books you will get like this 4-formyl butanoic acid. Already मैंने बोला जहाँ भी 1 होगा ना, 1 होगा, you can skip that, ठीक है. कहीं कहीं पे ये 1 को स्किप करके डायरेक्ट ब्यूटानोइक एसिड लिखा होता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यू कैन स्किप 1, नो प्रॉब्लम, और यू कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस, ओके. सो लाइकवाइज these all no, you will just try because the time is short, so I'll not do all this. So already I have explained you taking examples of functional group where one functional group is there, 2 functional groups are there, okay. Now the last one, okay, because this rule already I have explained you. So if more than one functional group of the same type is present, what you will do, you will use di, tri, tetra like this, okay. So you can see here that alcohol, alcohol, same kind का functional group 2 present है, same type of functional group कितना है? 2 है. So first of all you write the structure nicely. CH2 के साथ connected है OH, इस CH2 के साथ connected है OH, ठीक है. ये कंडेंस फार्मूला था, वी हैव रिटन इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट. सो नाउ, सो विच इज द पेरेंट चेन? इजी. पेरेंट चेन इज दिस वन. नंबरिंग you can do from any side 1 2. how do we write the name? so name कैसा होगा? 1 2 means what? इथेन, ठीक है. 2 कार्बन means what? इथेन, राइट. और फिर हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना, सेम टाइप है, 2 है बट सेम टाइप, राइट. एल्कोहल, एल्कोहल, सेम टाइप. सो हाउ डू वी राइट? सफिक्स में लिखेंगे ऑब्वियसली. सो हाउ डू वी राइट? कौन सा पोजीशन पे? पहले पोजीशन को मेंशन करो, 1, 2, ठीक है ना. 1 में कनेक्टेड है, 2 में कनेक्टेड है एल्कोहल, सो 1, 2. और कितना है एल्कोहल? 2. सो यू विल राइट डाई. 3 देन ट्राई, 4 देन टेट्रा, डाई. एंड व्हाट इज द सफिक्स नेम ऑफ एल्कोहल? ऑल. So the name of this compound, you will not write ethane 1, 2 diol. Ethane 1, 2 diol. Okay. And here if you see that the last one, there is the one functional group, same type का 2 है, ठीक है. कीटोन एंड कीटोन. सो नंबरिंग यू कैन डू आइदर साइड, ठीक है. कहीं से भी करो, 2 और 4 ही मिलेगा. सो 1 2 3 4 5. So what it is? Pentane, right? The word root is pentane. Now 2, 4. What is the suffix name of ketone? On. कितना कीटोन है? 2 है, so dione. Pentane 2, 4 dione. So जब भी सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा हो, so you use these word di, tri, tetra, all that, and suffix name use करो जो कि टेबल में ऑलरेडी बताया, और word root तो you know. Okay, so here I'll end this video, right? If you found this video useful, do share this video, like and subscribe the channel. Okay, so thank you so much.